अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू campus.pk। आज की वीडियो में मैं आपसे बात बायोलॉजी के गेस्ट पेपर के हवाले से करूंगी, यानी कि 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बायोलॉजी का गेस्ट पेपर शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा क्योंकि इसमें आपके साथ तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे बायोलॉजी के ऑफ चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। सो फर्दर डिले किए बगैर चलते हैं वीडियो के जानिब। सबसे पहले मैं आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूंगी ऑफ चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज। पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है राइट डिफरेंस बिटवीन लेंटिकल्स एंड स्टोमेटा। सेकंड वन इज हाउ इज वॉइस प्रोड्यूस फ्रॉम वोकल एड। नंबर 3 व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन टीथ। Number 4 difference between daytime respiration and respiration of night. 5 what is passive smoking, how it is dangerous. 6 differentiate between breathing and cellular respiration. 7 how does the gaseous exchange occur in leaves and young stem. Number 8 define alveolus. Number 9 differentiate between nasal cavity and nostril. Number 10 differentiate between larynx and trachea. Number 11 what is meant by bronchitis, write the name of its two types. Number 12 write 4 system of bronchitis. Number 13 differentiate between acute and chronic bronchitis. Number 14 why does blood become thick due to smoking, give reason. Number 15 what is pneumonia, write its symptoms. Number 16 what is nostrils. Further हमारे पास 17, 18 and 19 क्वेश्चन आते हैं जिसमें you have to define pneumonia, epiglottics and diaphragm. लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस चैप्टर के आते हैं वो हैं डिफाइन वॉइस बॉक्स, डिफाइन इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन से ऑफ चैप्टर नंबर 10 बायोलॉजी गैसियस एक्सचेंज। फर्दर मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ ऑफ बायोलॉजी। द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो नंबर 1 है व्हाट इज होमोस्टैटिस, व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन। नंबर 3 हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो है डिफाइन एक्सक्रीशन, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड ग्यूटेशन, व्हाट इज रीनल पेल्विस, व्हाट आर कलेक्टिंग डक्ट्स, व्हाट इज नेफ्रॉन, डिफाइन लिथोट्रिप्सी, डिफाइन डायलिसिस, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्टोन फॉर्मेशन इन किडनी, राइट एनी 2 कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर, what is Bowman's capsule, write 2 reasons of kidney stone. 15 and 16 short question you have to define what is tubular secretion and urination system. फर्दर हम मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 12 की तरफ। तो मैं आपके साथ अब चैप्टर नंबर 12 के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करती हूँ जिसमें हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो है डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। Define coordinators with example, differentiate between sensory and motor neurons, what is nerve impulse, define pancreas, what is myopia, write down the function of rods and cones present in the retina of eye, differentiate between myopia and hypermetropia, define receptors, define myelin sheath, what is paralysis, write down its causes, define spinal cord, define night blindness, what is endocrine system, what is meant by brainstem, what is epilepsy. What are meninges, write down their function. Meninges, what are meninges, write down their function. Differentiate between aqueous humor and vitreous humor. Write down the names of neurons taking part in reflex. Why does salutary impulse is called jumping impulse. So ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप चैप्टर नंबर 12 के बायोलॉजी के। आगे मूव ऑन करते हैं चैप्टर नंबर 13 की तरफ। अब मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 13 के जो है शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करती हूँ विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन हाइलाइन एंड फाइब्रस कार्टिलेज, डिफरेंशिएट बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, हाउ लोअर jaw is different in mammals from other lower vertebrates, also give its advantage. Differentiate between compact bone and spongy bone. Write 2 minerals and found in bones. What are 2 minerals found in bones? Differentiate between movement and locomotion. What is skeleton? Write 1 merit. What are hinge and joint? Write give it 1 example. Differentiate between tendons and ligaments. What do you know about osteoarthritis? Differentiate. You have to next define upper and lower jaw in mammals and vertebrates. What is joint? What do you know about movable joints? In 14 and 15 short question you have to define arthrosis and insertion. तो ये तमाम 15 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 के
इम्पोर्टेंट थे। अब फर्दर मूव करते हैं चैप्टर नंबर 14 की तरफ। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी चैप्टर नंबर 14 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके पास आता है how building occurs in corals, define parthenogenesis with example, how plants produce by suckers, give example, what is cloning, define multiple fission, differentiate between two methods of pollination, differentiate between self pollination and cross pollination, what is reproduction, name its two basics या basic types, give two disadvantages of vegetative propagation, differentiate between apical germination and hypogeal germination, how binary fission take place in invertebrates, give an example, define endospores, give an example, define alternation of generation in plants, and the last 14 is write down all the generations of. So these all are the important short questions of chapter number 14. Now we will further move on chapter number 15. So the important short question of chapter number 15, the theory of special curation, name nitrogenous paste found in DNA molecule, differentiate between homozygous genotype and heterozygous genotype, state law of segregation, define homologous chromosome, what is inheritance, what are nucleosomes, what is recombinant DNA, define the Monroe's law of independent assortment, what is meant by natural selection, also give an example, define continuous variation, give source of variation, differentiate between transcription and translation, define codominance, give an example, define incomplete dominance, give example, define natural selection. Further जो क्वेश्चंस हैं, define natural selection, define artificial selection, differentiate between breeds and word size and cultivators. These total 17 short questions are the most important questions of chapter number 15. Now further delay, we will move on chapter number 16 and I will share the most important short questions of chapter number 16, which include define food chain and food web, define acid rain, how biotechnology has helped us in improving the environment, what is meant by decomposers, give an example, how differentiate between population and community. Second one I have missed, which is define acid rain. Number 6, define its biological nitrogen fixation, write two effects of acid rain, define deforestation, what is meant by denitrification, what is global warming, define predation, define species, write down the disadvantages of excessive denitrification. So the 14 question is about define ecosystem, 15 question is about what is urbanization, and the last important questions of chapter number 16 is what is greenhouse effect, name the important gases of the greenhouse effect. Now we will move on chapter number 17. So the first important short question of chapter number 17 is define biotechnology, what is continuous fermentation, define fermentation, what is fermentator, what is single cell protein, what is alcoholic fermentation, what is lactic acid fermentation, how biotechnology has helped us in improving the environment, give two objectives of genetic engineering, write down the 4 uses of formic acid. Next, these all are the important short questions of chapter number 17. Now we will move on the important short question of chapter number 18. So the first important short question of chapter number 18 is define pharmacology, what are tetrachlines, give an example, what are sedatives, give an example, what are synthetic drugs, what are hallucinogens, write about drugs obtained from plants, what are pharmaceutical drugs, what is heroin, what is the effect of CNS, for what purpose vaccines are used, explain drugs from animals, differentiate between antibiotics and disinfectants, what are necrotics, write down its uses, differentiate between pharmaceutical and active drugs, what are sulfur drugs, write down its one use, differentiate between bacterial and bacteriostatic antibiotics, define vaccine. 18 is about what is addictive drugs and further what is antigens and antibodies. So as I have shared all the important short questions of biology of class 10 of chapter 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. तो ये आपके लिए मैंने जो है आपको कंप्लीट क्वेश्चंस आपके लिए शेयर किए हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए जिनका अब नेक्स्ट पेपर जो है वो बायोलॉजी का होने वाला है, तो वो अगर इन क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए अपने पेपर की तैयारी करते हैं तो वो एक बेहतर जो है या आप कह लें कि एक बहुत अच्छे मार्क्स जो है सिक्योर कर सकते हैं। तो पेपर से पहले इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह आप जहन नशीं कर लें ताकि आपका पेपर जो है वो
एक अच्छे लेवल पे जाके अटेम्प्ट हो सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।